Hello friends, welcome back once again on Gyan Guru by Gaurav Gupta. Friends, this session is a continuation session for the last session in which we have discussed the basics of percentages. So last session में हमने क्या किया था? In the last session we have done percentage equivalents of fractions and the basic calculations which are related to percentages. Now let's move ahead and talk about the next thing that is very important in percentages. Now, this session again is relevant for any student who is preparing for CAT, CMAT, MHCET, or other aptitude entrance examinations. Okay, so if you are preparing for any of these things, then this session will be relevant for you, right? So let's start studying. Let's continue. Now, today's session is about percentage change. So it's a small and crisp session wherein we'll try to make the process of percentage change, percentage increase, percentage decrease a lot easier. Now easier का मतलब भी ये है कि obviously हमें time भी save करना है. So I'll be giving you a technique using which you will be able to write the expression, the final expression in a single step. Okay, so let's first of all talk about what is percentage change. Percentage change होता क्या है? So, in this process of percentage change, three elements are very important. One is initial value, okay, one is final value, and the next thing is the change between them, or we call it percentage change. So, we'll not be looking at absolute change. जो वैल्यू वाइज चेंज हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, बट एजेंडा क्या है यहाँ पे? परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना, राइट? So percentage change होता क्या है? We can describe percentage change using a formula. So percentage change is basically the change in value. Change in value ये increase भी हो सकता है और decrease भी हो सकता है, right? So important is change in value. I'm not saying कि final value minus initial value calculate करना है या फिर initial value minus final value calculate करना है. मैंने क्या लिखा है? चेंज. सो जितना भी वैल्यू वाइज चेंज है, whether it is an increase or a decrease, you will have to write it. Okay, now change divided by initial value multiplied by 100. This is how we define percentage change. So एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, परसेंटेज चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द इनिशियल वैल्यू. हमेशा डिनोमिनेटर में इनिशियल वैल्यू होता है, फाइनल वैल्यू हम कभी नहीं रखेंगे डिनोमिनेटर में. ओके, सो इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, these two things are given, and using this formula we can calculate the percentage change. All right, तो अगर मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं, लेट्स से इनिशियल वैल्यू इज 20 and final value is 26. So I can say that percentage change will be change. So कितने का change आया है? So since here the value is increasing, अगर value increase हो रही है तो आप बोल सकते हो final value minus initial value divided by initial value multiplied by 100. Okay, in case you want to learn one more formula, but I'm strictly against the formulas. So I'll not be giving you this formula. I'm not in the favor of learning more and more formulas. So यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? Change. Change कितने का आया है? Original value was 20, final value is 26. So the value has changed by 6. Okay. So 6, the change is 6 divided by the initial value which is 20 multiplied by 100. Okay. So this is the expression for percentage change. अब जो भी कैलकुलेशंस है कर सकते हैं हम परफॉर्म. सो 20 and 100 will get cancelled and the answer will be 30%. Okay, so there is a change of 30%. Now अगर नेचर ऑफ चेंज भी डिटरमाइन करना है तो क्लियरली विजिबल है, इनिशियल वैल्यू इज स्मॉलर देन द फाइनल वैल्यू, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे. So I can say that there is an increase of 30%. So we have determined the nature of change as well as the percentage change. All right, fine. Now in case the final value is less than the initial value, so instead of 20, let's say the initial value is 45 and the final value is, let's say, 36. Okay, so now clearly visible the value is decreasing, right?
So still I'll calculate percentage change in the similar manner. Okay. So change in value is from 45 to 36. Value decrease हुई है, but मैं उसको change consider करूंगा. So there is a change of 45 minus 36, which is 9. So 9 का change हुआ है. Once again, initial value 45, then multiplied by 100. Okay, so you can calculate this, and this change will come out to be 20% upon simplification. Nature of change find out करना है. So initial value is more than the final value. Value में decrease हो रहा है. So you can say that there is a decrease of 20%. Right? So this is how we calculate percentage change. But generally इतने easy questions नहीं होते हैं. Okay? So out of the three elements, initial value, final value, and the percentage change, out of these three elements, you will be given any two of them, and you will have to find out the third one. कोई भी दो elements given होंगे, initial value, final value, and percentage change. इन तीन elements में से कोई भी दो elements given होंगे, and आपको third element calculate करना है. Right? So one example we have already seen, जहां पे इनिशियल एलिमेंट, इनिशियल वैल्यू गिवन है, फाइनल वैल्यू गिवन है, एंड हमने परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर दिया. राइट? अब इनिशियल वैल्यू गिवन है, परसेंटेज चेंज गिवन है, फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है. राइट? सो परसेंटेज चेंज विल बी गिवन. Either we will have to calculate the initial value or the final value. So now let's have a look at this very important thing that acts as a shortcut or a trick of saving time in a lot of questions. So whatever you will learn here, this will be useful in saving time in the questions of profit loss discount as well as simple interest, compound interest. So the next 10 minutes are very crucial. Please be careful. Okay. So now when we are talking about percentage change, let's say initial value is given and percentage change is given, and we'll have to calculate the final value. हमें final value calculate करनी है. Right? So in this process, ये जो final value है, this can be written in the form of decimals, or this can be written in the form of fractions. So first of all, let's talk in general about this. इसके बारे में बहुत general discussion करते हैं. Let's not focus if it will be in decimals or if it will be in fractions. Right? So process को understand करते हैं. So let's consider an initial value of x. ठीक है, इनिशियल नंबर एक x है, एंड आई वांट टू इंक्रीज इट बाय p परसेंटेज. ओके, एंड विल हैव टू फाइंड आउट द फाइनल वैल्यू. सो x इनिशियल वैल्यू है, x को मुझे इंक्रीज करना है p% से. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज in x I will add p% of x. Okay, so x plus p% of x will be the final value. Right? Now let's simplify this. I can write it as x plus p upon 100 into x. If I take x common from here, I'll be left with 1 plus p upon 100. All right. Now this factor that I have written inside the bracket 1 plus p upon 100 is very important. It's very crucial. Now if you have an idea how to calculate this quickly, then you will be able to find out the initial value or the final value in a matter of seconds. ठीक है? तो ये जो फैक्टर है ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये बहुत यूजफुल है. राइट? अब प्रैक्टिकली देखते हैं. If I'll put the values here of x and p. So let's say the value of x is, initial value is 245, and I have to increase it by 20%. Okay, right? So मैंने अभी क्या किया है? I have explained you the entire process in which we have taken 3 steps to reach to the final value. Now you should not be taking 3 steps. It should be done in a single step. You should be saving 2 steps. It should be done in a single step. एक single step में हमें directly final answer लिखना है. Okay. Now you will be able to do this only if you are able to write this factor immediately. Okay. तो अब ये understand करते हैं कि ये factor कैसे बनेगा. Now 245 को 20% से increase करना है, so that means 245 plus 20% of 245. Right? Right now I'll not simplify it
ओके मैं इसको ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, आई जस्ट राइट द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ दिस आंसर. 245 कॉमन लिया and I'll get 1 plus 20 upon 100. Okay, 20 upon 100 ये चीज आ गई. नाउ 20 अपॉन 100, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो या फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो. सो फर्स्ट इज, अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं, सो 245 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 20 अपॉन 100 will become 0.2. Okay, so 245 multiplied by 1.2 will be the final expression of the answer. So what I was saying is you should be able to reach to this final expression in a single step. So ये agenda होना चाहिए हमारा. So let's understand how this factor can be made. Okay, so go up there wherever I have explained this properly. So factor कैसे बनेगा? जो भी percentage increase है उसको 100 से divide करो और 1 में add करो. Okay, I'll repeat, whatever the percentage increase is, उसको 100 से divide किया and 1 में add कर दिया and your multiplication factor will be ready. So that means if you have a question like x when increased by 23%, okay, x को 23% से increase करना है and you'll have to write the final value in a single step. Okay, so multiplication factor क्या होगा? It will be 23 divided by 100 plus 1, right? 23 divided by 100 will be 0.23. 1 add कर देंगे उसमें, so you will get 1.23. Okay, so 1.23 times x will be the final value. Okay, so now let's look at some more examples. So if initial value is x and I have to increase it by 42%, right? Now 42 divided by 100 is 0.42. 1 में add कर देंगे इसे 1.42 times the original value. Okay, x to be increased by 165%. You have to be very careful in this. x को 165% से increase करना है. So multiplication factor क्या होगा? 165 divided by 100. That will be 1.65 and then 1 will be added to this. Okay, so don't forget the formula, don't forget the process. 1 plus p upon 100. So 165 when divided by 100 it will be 1.65, then 1 will be added to it, so it will become 2.65x. ठीक है? Okay, so x when increased by 4.8% से इंक्रीज करना है. 4.8 को 100 से डिवाइड करेंगे एंड 1 में ऐड कर देंगे, सो इट विल बिकम 1.048x. Just be extra careful in determining the multiplication factor and I'm telling you the life will be very easy for you while handling the questions of percentages and its applications, right? Now ये तो हो गया increase. Now what if the value is decreasing? So let's say x decreased by 27%. x को 27% से increase करना है, sorry decrease करना है. So I'll take you back. Now यहाँ पे हमने एक चीज देखी थी, when I have to increase x by p%. So look at this part. Instead of increase, अगर यहाँ पे decrease होता तो मुझे क्या करना पड़ता? x minus p% of x. So जो भी plus sign है उसकी जगह minus sign आ जाता and finally inside the bracket it will become 1 minus p upon 100. तो जो मैं 1 में ऐड कर रहा था अब मुझे उस चीज को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है? So the factor will be 1 minus p upon 100. Okay, p का वैल्यू कितना है? 27. So it will be 1 minus 27 upon 100. अब थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं, केयरफुली परफॉर्म करो एंड आंसर आ जाएगा. ठीक है? So it will become 0.73 times x. So this is the way you can generate the factor when a value is increased by p%. All right? ठीक है? So initial value given है, percentage change given है, final value calculate करनी है. This is how you can do it. Okay? Now I'll take you back.
In this case, in this step, I have converted the factor in terms of decimals. Okay, अब इसको fraction में भी रख सकते हैं. Why not? Okay, so 20 upon 100 कितना होता है? 20 upon 100 अगर मैं simplify करता हूँ, so it is 1 by 5. So I will have inside the bracket 1 plus 1 by 5. Right? 1 plus 1 by 5 को simplify कर लो and it will become 6 upon 5. So the final value will be 245 multiplied by 6 by 5. Okay? Now 6 by 5 and 1.2 इन दोनों का value same होता है. So it totally depends upon your requirement of the question कि आपको ये जो final value है ये decimals में लिखनी है या fractions में लिखनी है. Totally depends. Now why I'm saying that it depends on the requirement of the question. So it depends on how you will be performing the calculations. कौन सी चीज comfortable है at that time, decimal में convert करना या फिर fraction में रखना. Okay. Also, not every percentage will be conveniently converted into fraction. हर कोई percentage को आप बहुत conveniently fraction में convert नहीं कर सकते. ठीक है, so कुछ कुछ ऐसी percentage values होंगी जिनको हम decimal में convert करेंगे and there will be some percentage values जिनको हम fraction में convert करेंगे. To understand this properly, watch my previous video in which I have explained percentage equivalents of fractions. So वहां पे कुछ ऐसे ऐसे percentage हैं जिनको हम easily fractions में convert कर सकते हैं. So if you see those kind of percentages, तो उन type के percentages को, those type of percentages like will be conveniently converted into fractions. For example, so let's say I have to increase x by 16.66 percentage. Okay, so अगर मैं इसको डेसिमल में लिखता हूं तो डेसिमल में लिखने में क्या आएगा 1.1666x. बहुत इनकन्वीनियंट लग रही है ना वैल्यू, राइट? बट इफ यू नो दैट 16.66 percentage is 1 by 6 in terms of fractions. So final value क्या होगी? Final value will be 1 plus 1 by 6 times the original value. 1 by 6 is the fraction equivalent. मैंने क्या किया उसको 1 में ऐड कर दिया and the final value will become 7 by 6 times x. Okay, so we'll be looking at more examples in in the minutes to come. Okay, so keep it in mind कि हम यहाँ पे दो डायरेक्शंस में जा सकते हैं. डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. फ्रैक्शन में it will be better कि उन्हीं percentages को convert करो which can be conveniently converted into fractions. Again, watch my previous session in which I have explained percentage equivalents of fractions. Okay, so now here we'll be going in two directions. Percentage change in decimal terms. So x when increased by 49 percentage, I can say that final value will be 1.49x, right? But when I want to convert it in fractions, it will be better if the percentage can be easily converted. Like x when increased by 14.28 percentage, right? 14.28 percentage इसका fraction होता है 1 by 7. So the final value will be 1 plus 1 by 7 times the original value, that is 8 upon 7x. Right? Now taking some more examples for this, x to be increased by, let's say, 44.44 percentage increase करना है. Now 44.44 percentage. Again, if I'll go back to the previous lecture, 11.11 percentage can be written as 1 by 9. Look at the right hand side of your screen. Now, अगर मैं इनको multiply by 4 करता हूँ तो 44.44 percentage will be 4 upon 9. Right? So there is an increase by a fraction of 4 by 9. Final value क्या बन जाएगी? 1 plus 4 by 9 times the initial value. Okay, so that is 9 and 4 13. 13 upon 9 times x. This will be the final value. All right, one more example. X
when decreased by x को अगर डिक्रीज करना है लेट्स से 37.5% से, so 37.5% क्या होता है? 12.5% is 1 by 8. So 37.5% is third multiple of this. So it will become 3 by 8. Alright. So 37.5% is 3 by 8. Now since we are reducing the value by 37.5%, so the final value will be 1 minus 3 by 8 times the original value. Okay. So final value will be 5 by 8 times x. Right? So this is when we are converting, we are writing the final value in terms of fractions. अब initial value और final value का खेल नहीं है यहाँ पे. The game is about the factor that we are generating. Okay? So now let's understand if we will have to go back, हमें reverse direction में जाना है. ठीक है? So अगर हमें reverse direction में जाना है, अभी तक हमने क्या किया? Initial value was given, percentage change is given, एंड हमने फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर दिया. अब अगर इसका रिवर्स प्रोसेस है, सो रिवर्स प्रोसेस में सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस प्रॉपर्ली कि हुआ क्या है यहाँ पे. ओके, सो वी हैव इनिशियल वैल्यू, वी हैव परसेंटेज चेंज एंड वी हैव अ फाइनल वैल्यू. ओके, सो फर्स्ट थिंग, ये जो फैक्टर हमने जनरेट किया, ये कैसे किया? ओके, सो दिस वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड. But from this we have learned that if there is an increase, अगर percentage increase है तो factor जो भी होगा वो 1 से बड़ा होगा. The factor will be more than 1. If it's a percentage decrease, the factor will be less than 1. Factor 1 से छोटा होगा. Right? So factor जो भी हमने create किया, that will be created in the similar manner. So x को अगर मैं 24% से इंक्रीज करता हूं तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.24x. सो 1.24 ये फैक्टर कैसे जनरेट हुआ ये हम समझ चुके हैं. ओके, नाउ इनिशियल वैल्यू से अगर मैं फाइनल वैल्यू पे जा रहा हूं तो ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, इनिशियल वैल्यू गिवन है, आई एम राइटिंग द फाइनल वैल्यू, दिस फैक्टर विल बी मल्टीप्लाइड. ऑन द अदर हैंड, if final value is given and I have to calculate the initial value, the same factor will be divided. सोचो ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके, सो इफ दिस इज द वैल्यू एंड आई हैव टू रीच टू x, कैन आई से दैट मैंने क्या किया? 1.24 से डिवाइड कर दिया. सो दिस इज व्हाट यू विल हैव टू डू. ओके, सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट टू थिंग्स. व्हाट इज द फैक्टर? ओके, फैक्टर क्या होगा कैलकुलेशन कर लेंगे हम, एंड फैक्टर मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट बोथ दीज थिंग्स टुगेदर बाय टेकिंग 4 एग्जांपल्स. राइट, सो इनिशियल वैल्यू इज गिवन, इंक्रीज ऑफ 24%. ऊपर जो एग्जांपल लिया है, इंक्रीज ऑफ 24%. So since there is an increase, the factor will be more than 1. तो factor क्या होगा? 1.24. Okay, right? Factor will be 1.24. Done? Now since I'm going from initial value to final value, तो ये factor को multiply कर देंगे. So final value क्या हो जाएगी? 1.24 multiply x. Right? On the other hand, if the question is initial value is not known, but after an increase of 24%, the final value is x. ठीक है? Initial value is not known, but 24% का increase करके final value x है, and we will have to calculate initial value. तो अब हम क्या करेंगे? So first thing, what will be the factor? Factor क्या होगा? 24% का increase है, तो factor 1 से बड़ा होगा, तो factor क्या होगा? 1.24. फैक्टर सेम तरीके से कैलकुलेट होगा irrespective of increase, irrespective of we have to go from initial to final or final to initial. इंक्रीज है तो फैक्टर 1 से बड़ा होगा, 1.24 का फैक्टर आ जाएगा. डन. बट वी आर गोइंग फ्रॉम फाइनल वैल्यू टू इनिशियल वैल्यू, तो ये वाला जो फैक्टर है ये डिवाइड हो जाएगा एंड द इनिशियल वैल्यू विल बी x upon 1.24. ओके, अंडरस्टूड?
In both the examples, there was an increase, but first example में हमें initial से final value पे जाना था, second example में final value से initial value पे जाना था. That is why the difference is first case में मैंने multiply किया, second case में divide किया. Okay. Now on the other hand, initial value given है, but there is a decrease of 24%. So जब भी decrease होगा factor 1 से छोटा होगा. So here factor will be 1 minus 0.24, that is 0.76. Okay? क्योंकि हम initial value से final value पे जा रहे हैं, तो ये factor multiply हो जाएगा. So it will be 0.76 multiplied by x. But if there is a decrease of 24% and the final value is x, so initial value will be x divided by 0.76. Okay, right? So I hope using these 4 examples you would have understood कि हमें multiplication factor कैसे generate करना है, and initial value से final value पे जा रहे हैं या final value से initial value पे जा रहे हैं, तो multiply कब होगा और divide कब होगा. Okay. Now, whatever I have taught you today, all these things will be used as a shortcut technique. हमें shortcut technique में मजा आता है बहुत. Shortcut technique कुछ भी नहीं है. What you can do is you can save some steps. Formula याद नहीं करना पड़ेगा. 2-3 steps save हो जाएंगे, and you will be happy कि हमने आज shortcut तरीके से question solve कर दिया. So shortcut कुछ नहीं है. I have taught you the logical way of handling percentages, and these things can be applied to the questions of profit loss discount as well as simple interest compound interest. Generally we hate simple interest compound interest, but once I'll start teaching you simple interest compound interest, you'll start loving that. All right, so friends, at this point we'll stop here. In our next session we'll be discussing successive percentage change, which again can be treated as a shortcut technique at a lot of places. Okay, so I hope you would have liked this video. If yes, please do press the like button. Put some comments, your questions in case you have not understood something, you want me to explain you something. Please go ahead. Do not hesitate in posting such things in comments. Share this video with your friends and do subscribe to the channel. Thank you very much. Keep watching and keep learning. All the very best.